triumph over substance. That is the essence of the matter. And are we going to be so blinded by the harsh political reality, if you want to call it that, or the hard facts on the ground, that if the Election Commission on its own cascade of errors is channelizing, shoehorning people who are returned candidates of a political party into a quote-unquote independent status, subject to whatever council has to say on that, are we going to, are we bound by that, or are we bound by what plainly is the intent of the paragraph? Look at the substance of it. What is the political party? If, as a matter of form, in the very unusual circumstances of this case, one hopes and prays that in no future election is a major political party unable to contest a general election on its own election symbol, but these are very highly unusual circumstances. Are we going to be hidebound and allow the form of the matter to triumph over the substance? Yes. And allow, as a result of that, for the balance to be tipped impermissibly in as Election Commission appears to have done? That is the heart of the matter, it seems to me. I would again rephrase Justice Learned Hand and say this court should not become a fortress of a dictionary. That is not what when you cite these foreign authorities and our authorities and our authorities. जरा सुन, पूरी बात सुन लिया करें ना. आपकी नहीं मिली मुझे कोई. हम नहीं करते ना. मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ. आपकी मुझे कोई प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन. आप जरा सुन तो लीजिए ना. ये it doesn't cut much whatever. क्यों? मैं आपको बता देता हूँ. जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे. हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल. उसके साथ हशर किया गया है. ठीक है, ये उन लोगों की जरूरत है या इंग्लिस्तान में जहाँ आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ लिखा हुआ नहीं है. वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं. जब अमेरिका की बात करते हैं, उनका भी आइन को सदियों गुजर गए. तो हमारा जो आइन है कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है. और उसके बाद ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल एच्ड इन स्टोन है कि अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन और सोशल स्ट्रक्चर एकदम से इतना तब्दील हो गया है. अभी जो ओवरहॉल किया था रजा रबानी साहब की जो कमेटी ने, क्या वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 18th अमेंडमेंट. जी 18th अमेंडमेंट. वो कब की थी? रिसेंट है, 2010. सो ठीक है. तो उन्होंने एक एक चीज जाके, और वो मुश्तरका तौर पे तमाम सियासी पार्टी उस पे थे. वो भी पार्टी जो नेशनल असेंबली में नहीं थे, जहां तक मुझे याद आता है, वो सब ने मुश्तरका तौर पे, कुछ लोगों ने एक दो अपने पॉइंट्स रिजर्व किए. मगर ये वो वाला जो इंटरप्रिटेशन है कि ये सदियों पुराना डॉक्यूमेंट, अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, और अब इसमें नहीं कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है. जब अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम अपनी अकल और अपनी दानिश को बेहतर समझें कि ये जो बराबर के जो, बल्कि वो भी नहीं, जो पेरेंट्स जिन्होंने आइन बनाया था उनसे हम ज़्यादा होशियार हो गए या ज़्यादा अक्लमंद हो गए. तो ये तो बहुत ही वो एरोगेंस और अना की बात आ जाएगी. हमें इसीलिए लफ्ज़ देखना है आइन के. ये पुराना आइन नहीं है, ये नया आइन है. पाकिस्तान में बड़े आइन साजी हुआ, इसमें भी क्या क्या हुआ है. फिर वापस मुश्किल से पटरी पे लाते हैं, फिर कोई आता है उसको उड़ा देता है, फिर कोई बेसिक डेमोक्रेट्स बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है. तो अब आप तो माशाल्लाह इसके तो अब लर्नड हैंड को हम कोट करें, वो अपनी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है उनकी बात, उनके आइन ने बहुत सारी चीज़ें की थी जो हमारे आइन ने कभी नहीं की. स्लेवरी उनने अलाउ की थी, विमेन को राइट्स नहीं दिए थे, वो उनका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी. हमारा आइन है ही प्रोग्रेसिव टू बिगिन विद. सो उसमें आप ज्यादा प्रोग्रेसिव एलिमेंट मजीद क्या डालेंगे? प्रोग्रेसिव जो लफ्ज है उससे जरूरी नहीं है, कभी कभी पुरानी चीजें भी अच्छी होती हैं. ये भी ख्याल रखिए. ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा लफ्ज है. ये बताइए फैसल साहब जी, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the constitution
in the light of whatever has happened, and the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit, it's a genuine debate. As far as I am concerned. जी सर. सर आप तो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन. हम प्रोग्रेसिव वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या किया. देखिए असल बात तो ये है कि हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है. ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं. जी जी सर, यू आर नॉट, आपने भी पूरा चैलेंज नहीं किया, आप भी रुक गए, आप भी आधे रास्ते में रुक गए. वो एक्सप्लेन करें. आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती. नहीं, और मैं सर ये आपको याद दिला दूं, जी जी, आई जब जरूरत होती है आते हैं. अगर आप शायद देखें कन्वीनियंटली कुछ चीजें जो पसंद नहीं आती उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है. वो वक्त भी था जब एक 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे. वो भूल गए. पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी हमने ही दी ना. पीटीआई हमारे सामने था, एसएम जफर साहब उनके वकील थे, वो सेनेटर भी हैं, आज वो शायद नजर नहीं आ रहे हैं हमें, सॉरी अली जफर साहब, तो आज नजर नहीं आ रहे हैं. तो ये ना कहिए ये खूब ये उंगलियां उठाना और ये बाहर बड़े बड़े शोज करना, सच भी कभी कभी बोल दिया करें. इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जी किया? मुझे मालूम है सर. कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका. पीटीआई थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, हमने फिर भी उस ऑर्डर को सेट असाइड किया कि इलेक्शन हो. तो ये खूब है. और ये बात जो आपने बात कही कि इसकी उसकी कोई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो भी किसने किया था? हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं. आप तो नहीं, आप तो कन्फ्लिक्टेड नहीं है या हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं. मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो. कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर. वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो. अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के हैं ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है. जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? क्या आप 3 लोगों पे 91 लोग ऑफिस होल्डर्स के माने इलेक्टेड? तो क्या नो, आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करेंगे. I have not discussed that judgment because it's sub judice. No, फिर आप आधी बात. I don't want to. Sub judice कैसे फैसला हो गया है? सर रिव्यू पेंडिंग है, I think. अच्छा, ओके. तो फिर आप नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में. जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते. नहीं, मैंने उसके बारे में, मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से. मेरा कोई बात नहीं. आइन पे चलें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी. आपकी तो जजमेंट मिस इंटरप्रेट, क्योंकि जो आपने इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया, आप वो पढ़ेंगे ईसीपी का रिप्लाई. अब जरा ये जो आपका फाइनल जी पैराग्राफ है पढ़ लें सर.
although such a proportional یہ آپ نے کہا ریویو کیا، مجھے تو پتہ نہیں کوئی ریویو ہوئی ہے. ذرا Sir, there is a review, I think. ہاں جی ریویو فائل ہوئی. جی ہمیں سب ریویو ہوئی ہے نا 13 جنوری والے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہوئی. ریویو فائل جی ابھی تک لگائی نہیں ڈسپائٹ لیپس آف 5 months. جی حامد خان صاحب ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، ایک دفعہ بھی نہیں ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی ذکر کیا ہے میرے سامنے؟ کبھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہمارے کی، اگر آپ نے فائل کی ہوئی ہے تو ریویو کی لگی نہیں، کیوں نہیں؟ بہرحال ادھر معلوم کیجئے. چلیں فیصل دیگی sir, although next point, sir, although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law, this is the other word used in the provision. But this is critical, sir. But no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے یا یو کین ناٹ ہیو ٹو سیپریٹ پروسیس. کیا ان کو کہیں نہیں، ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا، کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے. There is a provision for filing the list of nominations. Sir, not before the election. یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیں یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، جب ایک دن نومینیشن پیپر فائل ہوتا ہے پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ، پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے، تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا، اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ. نہیں تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ تحمل سن لیں نا سوال. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے نا. اس کا مطلب ہے کہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے، اسی لیے نومینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. نہیں سوری، دس از موسٹ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے سر، میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں، تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نومینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں، زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں، جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے. تو وہ آپ کا کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے. نومینیشن پیپر بھی فائل کریں گے، اس کی ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگرس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.